Everyone, myself Shivans, and my topic for presentation is dehydrofreezing. So let's begin with the presentation. The introduction part include dehydrofreezing is also known as the freeze drying is a method of preserving perishable materials such as food, pharmaceuticals, and biological samples by removing water from the material through the process sublimation. The process involves freezing the materials to a very low temperature and then subjecting it to a vacuum. Under vacuum conditions, the frozen water in the material is converted directly from a solid to a gas phase without passing through a liquid phase. This leaves the material dehydrated and in the stable freeze-dried state. The triple point of water is an important part of this process because triple point is that point where the gas, liquid, and the three phases of the water exist together. Now, the freeze dryers are the big equipments that large scale dehydrofreezing instruments that are commonly used in industrial settings. They work by removing water from food products through a process called sublimation, where ice is directly converted to vapor without going through a liquid phase. Instrumentation of the freeze dryer include these heaters. This is freeze dryer chamber where heaters are there and trays are there, and it is connected to a condenser and it is connected to a vacuum pump. Now try to understand each part correctly. So freeze dryer chamber, this is the main component of a freeze dryer. It is a vacuum sealed container where the product to be freeze dried is placed. The chamber is equipped with cells or trays that hold the product during the drying process. The condenser is used to trap the water vapor that is removed from the product during the freeze drying process. The water vapor is frozen onto the condenser coils and removed from the chambers, preventing it from re entering the product. Now, the vacuum pump is used to create and maintain a low pressure environment in the freeze dryer chamber, and this is essential for the sublimation process to occur. So, basically, जिस चैम्बर्स से ये कंडेंसर कनेक्टेड है एंड उससे वैक्यूम पंप कनेक्टेड है. वैक्यूम पंप एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लो हो जाता है और सब्लिमेशन प्रोसेस होता है. और जो वाटर वेपर निकल रहे हैं उसको ये कंडेंसर एब्जॉर्व कर लेता है. इसमें ये कॉइल्स लगे हैं जो उस वाटर वेपर को एब्जॉर्व करता है ताकि वो वाटर वेपर वापस प्रोडक्ट में ना जा सकें. नाउ प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं जो कि प्रेशर को मेंटेन करते हैं, प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं. एंड देन टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं जो कि टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं. कंट्रोल सिस्टम जो कि पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फ्रीज ड्राइंग प्रोसेसेस को, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम लेवल जो कि हमें उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेंटेन करना होता है वो कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करता है. देन वी गिव अ हीटिंग सोर्स जो कि कॉइल होता है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है हीटर्स की जगह पे. नाउ वर्किंग समझे तो हमें प्री ट्रीटमेंट करना होता है. प्री कंसनट्रेट योर प्रोडक्ट इन नॉर्मल ड्रायर. फिर प्री फ्रीजिंग करना होता है -18 to -50. देन प्राइमरी ड्राइंग होता है. एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स. देन सेकेंडरी ड्राइंग होता है एंड आफ्टर देन पैकेजिंग होता है. Then types of freeze dryer. Different type of dryers are used depending on the material to be dried. The dryers are classified as pilot freeze drying and industrial freeze drying. Industrial freeze drying is multi-batch freeze dryers, continuous freeze dryers, tunnel freeze dryers, and vacuum spray freeze dryers. Pilot freeze dryers is the small size mainly used in food laboratories में, pharmaceutical industry में, since they are used to explore the possibilities for the preservation of biological material. Now, industrial freeze dryer multi-batch freeze dryers होते हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल सेटअप में यूज़ होते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मिनिमम इन द बैच फ्रीज ड्रायर. जो पिछला वाला फ्रीज ड्रायर था उसमें रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इस मल्टी फ्रीज ड्रायर को लाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेटअप में काम करता है जिसमें नंबर ऑफ बैच एंड कैबिनेट्स होते हैं. Now, if you go to the continuous freeze dryer, the continuous type of dryer is economic in terms of labors, large capacity, and to get uniform drying. There's two type of continuous freeze dryers are available: static or tray, in which the freeze dried product is stationary on trays, and a dynamic or trayless dryer in which the product is moved with belt conveyors. Next thing is tunnel freeze dryers. The tunnel freeze dryers consist of large vacuum cabinets in which the tray carrying trolleys are loaded at one end. The end is discharging end where the dried products are unloaded. Okay, the vacuum locks are fixed in each end of the dryer. Low pressure steam is used to heat the plates. In this type of dryers, it is possible to dry different type of food materials at the same time. Now, cottage cheese and coffee are the best example of method of drying. Now, vacuum spray freeze dryers, the product is sprayed from a single jet upward or downward in a cylindrical tower of 3.7 meter diameter by 5.5 meter height. The liquids solidify into small particles by evaporative freezing. The whole plant operates under a vacuum of about 67 pascals.
frozen particles obtained by spraying into a vacuum of about 150 mm in a diametrical loose, about 15% of moisture in the initial evaporation. There is no sticking of the particles. This is the vacuum spray dryer. Application in food industry is coffee products. The coffee products are ground beans and pre-concentrated by evaporation and freeze dried immediately to prevent the large ice crystals. कॉफ़ी मेकिंग में हम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट इज़ fruit and vegetables. Most of the fruits and vegetables are suitable for freeze drying process. For example, strawberries should be sliced then loaded directly into the trays and dried with the temperature of 50 degrees centigrade. A drying time of 2 hours is possible. सो अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए यूज़ करें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देना होगा एंड 2 आवर्स ऑफ ड्राइंग टाइम की ज़रूरत पड़ेगी हमें. मशरूम्स में 82 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें और 3 आवर के पॉसिबल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस को करने के लिए. सिमिलरली श्रिम्प्स में 52 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा हमें और 10 आवर के ड्राइंग टाइम की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्री कुक्ड सैल्मन है, श्रिम्प के बाद अगर सैल्मन की बात करें तो वहाँ पर 13 mm थिक ड्राई अगर स्टिक है तो उसको 9 आवर लगता है एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज़ फॉर डिफरेंट. फॉर एग्स के लिए अगर 10 mm की एक ट्रे है और उसमें हमने उसे फिल किया है तो फ्रीजिंग ऑफ -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 9 to 10 आवर्स के बाद वो फ्रीज ड्राइड होगा प्रोडक्ट. Then why to choose freeze drying? First, fresh or cooked food are flash frozen, then placed in a vacuum chamber. About 90% of the food moisture is drawn off, evaporating the ice at temperature of lower 150 degree centigrade. When the water is replaced, the food regains its original fresh flavor, aroma, texture, and the freeze dried food is sealed in moisture and oxygen proof packaging. Advantage है retain taste, smell, and texture. Fewer loss of nutrient, reduced weight, fewer preservatives, extended shelf life, rapid dehydration advantage. एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टोरिंग में दिक्कत आती है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट को फ्रीज़ करने के लिए. ये सारे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीज ड्राइंग है. एंड देन ये एक कंपैरिजन है फूड्स का जो कि डिहाइड्रेटेड हैं जो कि फ्रीज ड्राइड है. फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली अच्छे बेटर कंडीशंस में हैं. कंक्लूजन ये है कि द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो कि उसके कारण जो उसका एप्लीकेशन है फूड इंडस्ट्री में बहुत कम हो रहा है. कुछ नए टेक्निकल सॉल्यूशंस अप्लाइड टू मॉडिफाई द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस एंड मेक इट टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव. इट इज सुटेबल फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज. थैंक यू एंड इट्स ओवर.